Hello, my dear student. Today we have to learn regarding the structural formula of organic compounds. In this topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. A very big topic, having so many articles. But this is really a base or foundation for the entire thing or entire organic chemistry, I will say. So learn it very properly. Now regarding the organic compounds, you know one thing, that all organic compounds are carbon compounds and they are covalent compounds. What do you mean by covalent compounds? Where carbon atom is bonded with other carbon atom or hydrogen atom or other atoms by a type of chemical bond, and that chemical bond is covalent bond. So basic thing in covalent bond, the sharing of one unpaired electron each by two atoms will take place. Okay, so whenever we write carbon has got 4 unpaired electrons in its outermost shell. How 4 unpaired electrons? Can you tell me? Can you guess? I will say that because carbon has got electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p2, and after hybridization it becomes 1s2, 2s1, then 2px1, 2py1 and 2pz1. Okay, now these 4 orbitals will undergo hybridization. You know well what is the name of that hybridization? sp3 hybridization. Okay, and now each carbon will have 4 sp3 hybrid orbitals and they will be directed towards the 4 corners of tetrahedron. Okay, and now if this will be joined with such carbon, if will get joined with one hydrogen, then this will be one covalent bond. Another hydrogen, this will be the another covalent bond. Yet another, then that will be the third covalent bond. And the fourth unpaired electron with fourth hydrogen atom, another CH bond will be formed. So you are watching here, 4 CH bonds have been formed and they are called as covalent bonds. A covalent bond is formed by sharing of one unpaired electron each by two atoms. Carbon is having one unpaired electron shared with unpaired electron of hydrogen and that is kept common between them. ये शेयरिंग जो किया जाता है एक टाइप की पार्टनरशिप है, दोनों के लिए कॉमन है, इक्वल कैपिटल है. यू आर नोइंग दैट. ओके, तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको है अनपेयर्ड कार्बन को, और उसके साथ जब 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, सो वी गेट दिस CH4 compound and this organic molecule will be known as what? मीथेन. ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन, CH4, the basic alkane, I will say, having one carbon atom. Okay, अब ये we are going to learn that there are so many methods of writing the structure of organic molecules. तो इसमें ये जो मेथड दिखाया है इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर.
बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट लाइक दिस. तो फिर इसको कैसा भी लिखा जाएगा अभी, और दैट मे बी रिटन लाइक दिस, कार्बन and these are 4 hydrogen, 4 dash I am placing here. This is known as the dash formula. A single dash will indicate what? A single bond, and this is called as the dash formula. ये क्या हो गया उसका? dash formula. Okay, where single dash, यानी ये एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डैश हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में कोई ऐसी रस्सी बांध के रखी है, ऐसा नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. दे आर कीपिंग देम टुगेदर. अब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट? केमिकल बॉन्ड. बॉन्ड कहते हैं इसे हम, बंधन, बंधन प्यार का, isn't it? जैसा मैरिज बॉन्ड है, आई विल से. अब ये बॉन्ड दिखने के लिए तो हम कुछ कन्वेंशन यूज करना चाहिए, ऐसा कैसा समझ लेंगे? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये डैश यानी एक कन्वेंशन है, एक संकेत है, ऐसा जान लेने का कि इन दोनों में बॉन्ड है. जैसा मैरिज बॉन्ड के बाद हम देखते हैं दैट वुमन वाइफ विल वियर दैट लॉकेट, मंगलसूत्र जिसे कहते हैं, तो उससे पहचाना जाएगा दैट शी इज बॉन्डेड, मैरिड है, isn't it? और पुरुष को अगर पहचानना है मैरिड तो कैसा पहचानेंगे? अगर ऐसा शोल्डर्स डाउन है, डल चेहरा है, पहचान लेना दैट दिस इज मैरिड. ओके, जस्ट एज ए फन आई एम सेइंग दिस, बट एक्चुअली डैश इज ए कन्वेंशन टू शो द बॉन्ड. समझ में आ गया? अब देखो, मीथेन को हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया है इन वन प्लेन. सो डज इट मीन दैट ईच HCH बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री और ये पांचों भी एटम एक ही प्लेन में है, ऐसा आपको लगता है? इससे तो ऐसा ही लग रहा है, बट देयर इज नो वे अदर टू राइट लाइक दिस. ये 2D में अगर हम लिखने वाले हैं 2 डायमेंशन में, तो डेफिनेटली हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा. बट एक्चुअली Van 't Hoff and Liebel had shown that मीथेन हैज नॉट गॉट सच स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है. उसको एक 3D स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं टेट्राहाइड्रल मॉडल. यानी टेट्राहाइड्रॉन के सेंटर में कार्बन है और उसके 4 कॉर्नर. टेट्राहाइड्रॉन एक भौमितिक फिगर है, जो दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसा स्क्वायर है, पेंटागन है, लाइक दैट. सो टेट्राहाइड्रॉन इज दैट फिगर वेयर कार्बन इज एट द सेंटर and 4 corners you will see there are 4 bonds, 4 hydrogen atom will be there. अब ये त्रिमिति का स्ट्रक्चर कैसा दिखाया जाएगा? Some of the times while writing the mechanisms of organic chemistry reactions, we need to write the structural formula in this 3D way. तो इसलिए मैंने हेडिंग क्या दिया है? 3-dimensional representation of organic molecule. तो उसके लिए भी एक संकेत बनाया गया. क्या संकेत बनाया गया? सॉलिड एंड डैश्ड वेज फॉर्मूला. सॉलिड एंड डैश वेज फॉर्मूला ये कैसा लिखते हैं? देखो, दैट सपोज दिस इज कार्बन, ओके, देन 2 hydrogen atoms which are present in the same plane, यानी
तीन एटम्स एक ही प्लेन में है. प्लेन ऑफ बोर्ड मैं कहूंगा और प्लेन ऑफ पेपर यू कैन से व्हेन यू राइट ऑन द पेपर. तो ये HCH, ये तीन एटम्स जो है दे आर इन ए सिंगल प्लेन. ओके. और एक हाइड्रोजन जो है इट इज कमिंग अबव द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. यानी जस्ट इमेजिन ये तीसरा हाइड्रोजन जहां पे मेरी ये उंगली दिखती है वहां पे कहीं तो भी ऊपर है. यानी सपोज दैट दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर, देन इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन ऑफ पेपर वन हाइड्रोजन एटम इज देयर. ओके. वन हाइड्रोजन एटम विल बी अबव द प्लेन ऑफ पेपर. तो जो अबव द प्लेन ऑफ पेपर है तो उसको कैसा दिखाना है? इट इज शोन बाय ए सॉलिड वेज लाइक दिस. इट इज शोन बाय ए सॉलिड वेज. वेज का मतलब जानते हैं? वेज इज दैट टाइप ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ आइदर वुड और मेटल which is broad at one end and tapering at other end. उसे वेज कहते हैं. ये वेज है. एक तरफ से ब्रॉड है और दूसरी तरफ से कैसा है? पॉइंटेड, टेपरिंग. वेज जिसको हम हिंदी में कील कहते हैं. कील कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं. देखो त्याला मराठीमध्ये पाचर म्हणतात. पाचर मारली. ओके. सो दैट कील इज देयर. तो ये वेज मैंने ऐसा दिखाया है. वो वेज भी देखो आप ऐसा ही रहता है. सो वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी शोन हियर लाइक दिस एंड दिस सॉलिड वेज विल बी above the plane of paper. Okay, it is above the plane of paper. Okay, towards the observer. इसको और क्या कहूंगा मैं? Towards the observer. अगर हम उसे वॉच कर रहे हैं तो हमारी तरफ ये है. ओके. एंड द अदर विल बी लाइक दिस. द अदर हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड दैट विल बी प्रेजेंट लाइक दिस. दैट विल बी शोन लाइक दिस. ये चौथा जो हाइड्रोजन है इट इज बिलो द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड और बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. यानी देखो ये हो गया एक प्लेन. यहां पे कार्बन उस प्लेन में, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन उधर. ओके. नाउ वन हाइड्रोजन इज हियर, कहीं तो भी यहां आगे आएगा. दैट इज शोन बाय सॉलिड वेज. एंड वन हाइड्रोजन विल बी बिहाइंड. ये हाथ के पीछे एक हाइड्रोजन होगा. That is behind the plane of the board or behind the plane of the paper. Okay. And that will be shown by the dashed wedge. This is actually dashed wedge. Away from observer. Away from observer. जो देख रहा है उससे बिल्कुल दूर. And these two are in the same plane. In same plane. जो ऐसे नॉर्मल लाइन, नॉर्मल डैश जो दिखा है इन सेम प्लेन. ओके. along with the carbon. So this is called as the solid and dashed wedge formula. Solid and dashed wedge formula. इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है. While showing this wedge, you will find that, or you will have to notice that the broad end should be present towards the observer and tapering should be present towards the away from observer. Okay, यहाँ पे observer यहाँ पर है, ऊपर आ रहा है,
So broad end is towards the outer side and tapering towards carbon I am saying here. Okay. और ये दूसरा जो है जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो यहां पर भी वही एप्लीकेबल है. देखो आप, ब्रॉड एंड इज टूवर्ड्स द कार्बन, दैट मीन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड नैरो एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ओके, ब्रॉड एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, नैरो एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, नैरो एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. So try to learn this, a very simple concept. Now देखो, there is a dual advantage of this kind of the article there. जब हम पढ़ते हैं, concept clarity is very essential. Concept clarity बहुत ही essential है. इस वीडियो का आपको एक बेनिफिट ऐसा है, आप फिर एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आई एम श्योर. ओके, अनदर थिंग, इट विल बी यूजफुल, दिस video will be useful for board examination, subjective type of question, as well as for the MCQ pattern. इसमें MCQ पैटर्न में भी MCQ सेट हो सकते हैं, बोर्ड पैटर्न में भी क्वेश्चन सेट हो सकता है. डिस्क्राइब द सॉलिड एंड डैश वेज फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आ सकता है. ओके, या MCQ भी आ सकते हैं. ओके, 3D स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज इंडिकेटेड जनरली बाय ABCD, चलते रहेंगे 1 2 3 4. You have to select the correct answer. What is that correct answer? Solid and dash wedge formula. In that solid and dash wedge formula, generally the broad end is facing towards. Broad end is correct answer क्या होगा? Facing towards the observer. So hope it will be useful to you in both the patterns. Thanks a lot.